अपर सर्किट 243 पे है इसका, तो अपर सर्किट तो काफ़ी ऊपर है इसका, ठीक है। और अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया है इसने इस रेंज में। यहाँ से ब्रेकआउट दिया इसने। कुछ क्वांटिटीज़ हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं और कुछ क्वांटिटीज़ हम अगर नीचे आए तो वहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। Well, hey guys, good morning. Today is 15th of January and we'll be looking at some stocks. So, meanwhile, the ORB is forming and running. We'll just be spending some time in cash because I do not go around everywhere in the screener and try to look around everything. If I want to work around, I'll just work around 2 to 3 sections which I like really much and which I'll also prioritize. So, we do see LIC here. Let's just switch it to daily time frame, and the people who watches these videos, make sure you hit that like button because that's free to do, right? You can certainly analyze and look at the levels. So Avanti feed already moved on day before. Akelia as well. Let's just go into Akelia, Sonatso, and Masfin. These are the stocks. MRPL, Chennai Petro, Previsal, Motilal OFS, refineries. एक बार refineries में we'll go. We'll check BPCL, Reliance, IOC, Inpetro. So generally जो buying and selling होती है वो sector dominant भी होती है बहुत बार. So we'll just look at how the other stocks of the same sector are performing, and as per that we can certainly make some decision, like this entire industry is having good buying stuff, so we can all along go with that thing, with the sentiment of that entire sub industry. So this is Masfin. It has opened 9 to 10% gap up. Let's check if there is some similar kind of moves into those stocks as well, and if some stocks are heavily gapped up, there could be some other stocks into that industry which could have really good money flow. Let's go and check Avanti Feed's अदर स्टॉक्स एज वेल. ओके, एनिमल फीड, गोदरेज एग्रो में देखते हैं कि अगर वहाँ पे कुछ बेटर प्राइस एक्शन है कि नहीं, क्योंकि रिसेंटली इसने भी बहुत अच्छा मूव दिया था, ठीक है. सो दिस इज 15th of Jan. रिसेंटली अगर देखोगे तो इवन ऑन प्रीवियस डेज द सेम सेक्टर स्टॉक वाज इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट. MRPL and we'll see PSU banks also looking good, I guess. IOB, Maharashtra Bank and every stuff. Let's check PSU banks में 27% ब्रेकआउट्स हैं. PNB है, इंडियन बैंक है, IOB में ब्रेकआउट आया, महाराष्ट्र बैंक में एक रेजिस्टेंस जो फेस हुआ उसका ब्रेकआउट आया, यूको बैंक में आया, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक. So we will see what kind of money involvement is there. It's quite strong, I would say. Now what I'll generally do is I will keep it open in a separate tab on another screen. So I'll keep watching PSU bank charts. If similar kind of further extensions, we start getting into these stocks again today. And what are the kind of stocks that we can generally pick out of these kind of sectors? I'll generally switch it to daily time frame. Switching it to daily time frame, I see some good aggression into Nifty PSU banks, although we'll be looking out for further continuations into these stocks. And if on previous days when we know that the PSU banks had really decent buying stuff, and we can pick out some stocks which did not move on those days, and today they are trading into good zones. Probably they recovered from those zones on previous days and could be getting ready to give decent moves. Okay, Canara Bank, Indian Bank, PNB is certainly standing at a good point, and that previous day as well it did not move much. We'll keep watching these structures all along,
and check what's happening. Nifty Media is having 20% breakdowns, Network 18, Zeal, Nifty Realty 10%, Nifty IT 9%, Nifty Auto 7%, Nifty Pharma 5%, Sanofi. So generally what we can do into these kind of stocks is that when we have good gaps, we can simply keep trailing on swing lows, which will be formed into these stocks slowly as they go up, because they'll not shoot up directly. Okay, Zeal has given a breakdown. NDTV, Hathway, Network 18, Sun TV, टीवी 18 है, यहाँ पे NDTV है, टीवी 18 का बुलिश जोन में टाइम स्पेंड किया यहाँ पे इनका. If we just simply check, they have been into a tight accumulation ranges, and it would certainly be not comfortable sitting in sell off into this stock. That's the opinion. Now whenever we are going into these kind of trades, we should not be taking in too much risk, because that's certainly a little bit against the flow. So we do see the stocks moving slowly and nicely. FMCG is again bearish. Nifty Metal has given a breakdown. Nifty Auto में 35% breakdowns है. Nifty IT में 27% breakouts हैं. Nifty PSU Bank में breakouts हैं. TechChem, Persistent, HCL Tech. कुछ स्टॉक्स में काफ़ी गैप अप हो गया, उसकी वजह से stuff doesn't look to be sustaining. Okay, let's go in cash. MRPL refineries का पार्ट है. चेन्नई पेट्रो नीचे आ गया. पैकेजिंग, PNC Infra. PNC Infra is also trading at a decent point. Let's check if there are any breakouts and all along. Okay, so the stock already is having a breakout. Okay, so the percentage of stop loss has increased significantly. It will try to come down surely. PNC Infra कौन से सेक्टर का है ये? सिविल कंस्ट्रक्शन. PNC Infra में देखते हैं, अगर ये सही प्राइस में मिलते हैं तो PNC Infra में एक लेवल तो अच्छा खासा क्लियर आउट किया. ठीक है, तो इसको मैं PNC Infra को मैं ऐड कर लूँगा, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं इसको. एक फर्दर कंसोलिडेशन होगा उसमें, उसके बाद में देखेंगे. लेट्स क्लोज इट आउट. PNC Infra में एक बार चल के देख लेते हैं. PNC Infra, RVNL, इरकॉन, पावर मैक, केनारकॉन, RVNL सर्टेनली एक अच्छी जगह पे ट्रेड कर रहा है. अभी जनरली अगर देखेंगे तो RVNL एंड इरकॉन एक अच्छे मूव देने के बाद में एक इस टाइट रेंज में दे हैव probably reaccumulated and trading and outside this zone. इरकॉन खोल लेते हैं. let's see what's the RVNL and इरकॉन दोनों में सेम टाइम पे ही ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे हमारे पास में एक ये बनता है. let's see how they close out और कितना इनमें वॉल्यूम वगैरह पंच होता है. that we will see here. दोनों स्टॉक्स ही एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में बर्स्ट कर रहे हैं, तो जनरली we can certainly see some good moves into these stocks. तो RVNL थोड़ा सा नीचे आ जाए तो RVNL में देखते हैं, आज एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, उससे पहले इसका मैं एक अपर सर्किट देख लेता हूँ फटाफट से. अपर सर्किट 243 पे है इसका, तो अपर सर्किट तो काफ़ी ऊपर है इसका. ठीक है, और अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया है इसने इस रेंज में. यहाँ से ब्रेकआउट दिया इसने, एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया है इसने, एंड कुछ क्वांटिटीज़ हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं, और कुछ क्वांटिटीज़ हम अगर नीचे आए तो वहाँ पे फिल कर लेंगे. ठीक है, इरकॉन भी सेम ही लग रहा है. अब ये कौन सा यूनियन बैंक क्रॉस कर रहा है. एक बार PSU बैंक्स के स्टॉक्स देख लेंगे. यूनियन बैंक अकेला क्रॉस करेगा तो फिर मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ. अगर सारे स्टॉक्स ही ब्रेकआउट दे रहे हैं देन दैट्स अ गुड थिंग. ठीक है, सो RVNL में यहाँ पे क्वांटिटीज़ कुछ एग्जीक्यूट की थी. ठीक है,
तो अगर उतनी क्वांटिटीज़ के साथ में ऊपर चला जाएगा, जो कि थोड़ा सा रेयर होता है स्टॉक्स कोई स्टॉक में, तो वो भी ठीक है अपने लिए। एंड ऑफ द डे वी आर इन प्रॉफिट, ठीक है। और अगर फुल क्वांटिटीज़ के साथ में अगर नीचे आके ऊपर जाता है तो दैट्स ऑल्सो अ विन विन सिचुएशन फॉर अस, ठीक है, बिकॉज these two stocks they have really good consolidation into previous days, 2 to 3 days, and एक मूव देने के बाद में जब भी एक रीएकुमुलेशन फेज आता है ना बहुत अच्छी एक इंटरेस्ट के साथ में, तो जनरली वहाँ पे हमें अच्छे मूव्स देखने को मिल जाते हैं और अच्छा कंटिन्यूएशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। आई विल जस्ट बी स्टिकिंग टू दिस ट्रेड। अगर कोई आफ्टरनून में कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह कुछ आर्ली टाइम फ्रेम बिगर टाइम फ्रेम पे मिलते हैं तो आई विल लुक इनटू इट। अदरवाइज आई एम जस्ट प्रीटी हैप्पी विद करंट 1 to 2 दैट्स रनिंग समवेयर क्लोज टू 1 to 2 नहीं, जनरली ये सब generally stock will take kind of some reversals around there, these zones जहाँ पे previous swing form वगैरह हुआ है. That's why we keep trailing them on previous swings and all. And at the end of the day it is up to market कि market हमें how much it wants to reward us, and that is completely we leave it to market. Anyways इसका जो stop loss है, trailing stop loss है, वो almost cost to cost आ चुका है, ठीक है. So there should not be any kind of thing that's that should stop you following from your system. Just keep following your system, and all along जिसने फार्मा में देखा, थोड़ा वेट किया, फार्मा में देखा कि फार्मा में स्ट्रेंथ अच्छा जनरेट हो रहा है, और फिर पार्टिसिपेट किया फार्मा में, एटलीस्ट जो प्रीवियस डे हाई वगैरह के ऊपर में है वहाँ पे, वुड हैव बीन रियली गुड ट्रेड्स. एंड ऑलवेज स्टॉक्स लाइक दिस वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो एक ओपन जोन में घूम रहे हैं अच्छे खासे एक. So guys, I'll leave you out with this live market experience of stock selection, and do not forget to hit that like button at least. Have a good day guys, bye bye.